स्टूडेंट, इससे पहले जो क्वेश्चन इसका जो टॉपिक चल रहा था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। अब यहाँ पर वहाँ था टू बैंकिंग कंपनीज और यहाँ पर है टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए, सेक्शन 51 of the Banking Regulation Act provides that certain provisions of the Act would apply to State Bank and its subsidiaries, Nationalized Bank and regional rural banks as they apply to banking companies. The applicable provisions are section 10, 13 to 15, 17, 19 to 21, 23 to 28, 29. The provision to section 51 also gives certain exemption from the applicable provisions regarding holding of office in approved institutions. Under section 10 subsection 1 clause C, to the chairman and the managing director of State Bank, granting of loan etc. under section 20 subsection 1 clause B third, to all banks and nominee directors in respect of section 46 and 47A. स्टूडेंट, इसके बाद इसके कुछ सी सेक्शंस दिए हुए हैं। सेक्शंस एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नंबर 1 पॉइंट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ शेयर। यानी जो कमीशन था, जो ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट को शेयर को सेल करते टाइम जो ये कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट थी, इसको रेस्ट्रिक्शन करना, यानी कि दूर करना। सेक्शन 13, इसका सेक्शन है 13, जैसे कि नो बैंकिंग कंपनी सेल पे आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट और remuneration in any form in respect of any shares issued by it, any amount exceeding in the aggregate 2.5% of the paid up value of the said shares. Number 2, prohibition of charge on unpaid capital, section 14. सेक्शन 14 में देखिए, नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन एनी अनपेड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड एनी सच चार्ज शैल बी इनवैलिड। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट, सेक्शन 14A। इसमें स्टूडेंट, नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी or any part of thereof unless the creation of such floating charge is certified in writing by the Reserve Bank
as not being detrimental to the interest of the depositors of such company. Any such charge created without obtaining the certificate of the Reserve Bank shall be invalid. Issue number 4. Restrictions as to payment of dividend, section 15. Section 15. No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalized expenses, including preliminary expenses, organization expenses, share selling, commission, brokerage, amount of losses incurred, and any other item expenditure not represented by tangible asset. Issue number 5. Reserve Fund, section 17. Every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and shall, out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29, and before any dividend as declared, transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than 20% of such profit. Number 6. Restrictions on nature of subsidiary companies, section 19. A banking company shall not form any subsidiary company except a subsidiary company formed for one or more of the following purposes, namely, the undertaking of any business which under clause A to O of subsection 3 of section is permissible for a banking company to undertake. Issue number 7. Restrictions on loans and advances, section 20. Point. Restrictions on loan and advances, section 20. देखिए सेक्शन 20 में as referred to banking companies undertaking loan and advances, यानी कि जो लोन एंड एडवांसेस देने में इजीली प्रोवाइड करना था, उस पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस करना, क्योंकि लोन से यदि ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो बैंक का कहीं ना कहीं एनपीए बढ़ेगा, और बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा. नंबर 8. रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन 21A. Rate of interest charged by banking companies not to be subject to scrutiny by courts. A transaction between a banking company and its debtor shall not be reopened by any court on the ground that the rate of interest charged by the company banking in respect of such a transaction is excessive. Student, next, restrictions on opening of new and transfer
of existing places of business, section 23. It means without obtaining the prior permission of the Reserve Bank, no banking company shall open a new place of business in India or change otherwise than within the same city, town or village, the location of an existing place of business situated in India. No banking company incorporated in India shall open a new place of business outside India or change otherwise than within the same city, town or village in any country or area outside India. The location of an existing place of business situated in that country or area. Student, next number 10, maintenance of a percentage of asset, section 24, as referred to banking companies. जैसे बैंकिंग कंपनीज रेफर्ड करेंगी उस तरीके से मेंटेनेंस करना होगा परसेंटेज ऑफ एसेट्स को. एसेट्स इन इंडिया एज रेफर्ड टू बैंकिंग कंपनीज. स्टूडेंट, आज हम इसके 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है. बाकी जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यानी 11 पॉइंट से लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.